अच्छा भाई, let us begin. Bismillahirrahmanirrahim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani. अच्छा भाई, हम अपनी लास्ट क्लास के अंदर मास वेट इन अपना टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के चैप्टर पे थे और उस चैप्टर के अंदर वी फिगर्ड आउट कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन होती है वो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स में कहाँ पाई जाती है। तो हमें इस बात का अंदाजा हुआ कि भाई द सेंटर ऑफ मास और द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर ज्योमेट्रिकली शेप्ड ऑब्जेक्ट्स जिनमें यूनिफॉर्म मास होता है, हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ दैट बॉडी। सही, जो उनके ज्योमेट्रिक जो बॉडी का ज्योमेट्रिक सेंटर होता है, दैट इज द प्लेस वेयर यू फाइंड द ज्योमेट्रिक सेंटर। और अगर हमारे पास, हमने कहा था कि उस जगह से हम ऑब्जेक्ट को पिवट कर देते हैं तो दैट ऑब्जेक्ट नेवर फॉल्स डाउन। उसकी वजह नहीं, वो रोटेट नहीं करता। उसकी वजह ये है कि जिस जगह आप उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल रहे होते हो वहां पे ऐसा लगता है हमें कि उसका सारा वेट लग रहा है। तो अगर उसी जगह पे पिवट बना दिया जाए तो देयर विल बी नो मोमेंट प्रोड्यूस्ड। सही, कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा ना। एज अ रिजल्ट आपके पास वो चीज ना राइट साइड पे गिरेगी ना लेफ्ट साइड पे गिरेगी। लेकिन अगर ये पिवट किसी एक साइड पे होता, जैसे कि हमें मिसाल दी थी भाई बैट की, कि किसी बैट को आप होल्ड करो तो बैट को आप साइड से यानी किसी एज से होल्ड करते हैं तो उसका जो वेट है वो आगे की तरफ होता है, जिसकी वजह से वो बैट जो है वो रोटेट करने की कोशिश करता है आपके पास। आप जितना उसको एज के नजदीक से पकड़ेंगे उतना मुश्किल होगा आपको उसको होल्ड करना, उतनी ज्यादा रोटेशन वो क्रिएट करने की कोशिश करेगा। क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला था फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स तो सेम है, वो बैट का वेट है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो चेंज हो रहा है। आप जैसे जैसे पिवट को पीछे मूव कराओगे वैसे वैसे आपका जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता चला जाए। फिर हमने बात की थी कि भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन होती है वो उस साइड पे ज्यादा शिफ्ट होती है जहां पे मास ज्यादा होता है हमारे पास। इट शिफ्ट्स टू द साइड वेयर यू हैव ग्रेटर मास। मैंने मिसाल दी कि इफ यू हैव अ टैंक, एम्प्टी टैंक, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में, लेकिन इफ यू फिल इट विद वाटर तो अब क्योंकि नीचे की तरफ मास ज्यादा है तो आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ओरिजिनल लोकेशन से थोड़ी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इस वजह से आपके पास जजमेंट करने का क्राइटेरिया होता है। लेकिन हमारी बात यहाँ पे आके एंड हुई थी कि सर अगर इररेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट है जिसका मास उसकी बॉडी में हम कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो उस केस में हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालें? तो टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन दैट सिचुएशन हम एक प्लम लाइन एक्सपेरिमेंट यूज करते हैं। अच्छा, प्लम लाइन एक्सपेरिमेंट ये है कि भाई लेट्स से मेरे पास एक इररेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट था। See, this is an irregular shaped object that I have with me, right? और मुझे इस पे एक्सपेरिमेंट करना है। आई हैव टू फाइंड आउट कि भाई इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कहाँ है। तो एक्सपेरिमेंट को करने का जो तरीकेकार है वो ये है कि हम एक प्लम लाइन एक्सपेरिमेंट करेंगे। प्लम लाइन में व्हाट वी हैव इज अ रेटॉर्ड स्टैंड we have a retort stand. Let me draw that. ठीक है, और इस रेटॉर्ड स्टैंड के फ्रंट पे, मतलब अगर ये आप इसका फ्रंट व्यू देख रहे हो तो साइड से रेटॉर्ड स्टैंड ऐसा दिखेगा। लेट मी ड्रॉ दैट फर्स्ट एंड देन आई विल गिव यू द टाइम टू राइट इट डाउन। ये साइड से ऐसा दिखेगा और हमारे पास यहाँ पे एक क्लैंप होता है जिससे हमने एक पेन अटैच की हुई है। सही, जिसके साथ हमने एक पेन अटैच की हुई होती है और हम अपने इस इर्रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट्स में कुछ होल कर देते हैं as far apart as possible.
नहीं होगा। प्लानिंग टू डू समथिंग, लेकिन लगता नहीं है कि वो हो पाए। So we made 3 holes in that object which were approximately as far apart as possible, और हमने जो है उसको 1 by 1 अपने इस पेंडुलम से हैंग करने का काम करना होगा। अब हम क्या करते हैं, देखो फ्रंट व्यू अगर मैं आपको दिखाऊं, हम अपने इस पूरे सिस्टम को इस तरह से हैंग कर देते हैं इन फ्रंट ऑफ द एंटायर सेट, और इसके आगे हम हैंग करते हैं एक पेंडुलम। इट विल लुक लाइक दिस। अगर साइड से देखोगे ना तो ये पूरी चीज ऐसी नजर आएगी कि दैट इज योर लैमिना, say hanging from a hole, and this is the pendulum hanging in front of it. See, this is how it looks like. तो अगर आप इसको फ्रंट से देख रहे होगे, this will look like this. एक छोटा सा पेंडुलम जो है वो आपके इर्रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट के सामने हैंग कर रहा है। अच्छा, आपने करना ये होता है कि आप जब भी कभी इर्रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने की कोशिश करते हो ना, तो आप एक माइंडसेट के साथ चलते हो। वो माइंडसेट आपका ये है, whenever you're going to hold any irregular shaped object and let it freely swing, वो चीज हमेशा मेरे बच्चे स्विंग करके ऐसे रुकेगी कि उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल आपके होल्डिंग पॉइंट के नीचे। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, if you hold anything, your mobile phone, your book, your copy, anything, if you hold it from a point and you let it swing, you'll see that it will swing and eventually comes to rest when the center of gravity is exactly below your point of contact. पता है क्यों? उसका रीजन ये होता है कि अगर आपके पास एक इरेगुलर शेप्ड होता है ऑब्जेक्ट, आप यहाँ से उसे होल्ड करते और उसका वेट इधर से लग रहा होता, तो होता ही है उस सिलसिले में कि आपके पिवट से वहां तक का एक डिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से एक मोमेंट प्रोड्यूस होता है और आपका ये ऑब्जेक्ट स्विंग करता है। स्विंग करने के बाद ये एक ऐसी पोजीशन पे आकर रुकता है कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल आपके होल्डिंग पॉइंट के नीचे, ताकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्रिएट ना हो सके। वो स्विंग करेगा और स्विंग करके कैसी पोजीशन पे आकर रुक जाएगा, अब आपको टेंशन ही नहीं, क्योंकि अब उसका वेट बिल्कुल उसके चलो के होल्डिंग पॉइंट, कॉन्टैक्ट पॉइंट के नीचे एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमें असल में ये पॉइंट ढूंढना होता है। तो हम बार बार जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट से हैंग करते हैं ना, पॉइंट से हैंग करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि वो जब भी आके स्विंग करके रुकेगा, उस पॉइंट के बिल्कुल नीचे हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो। और हम ये कर देते हैं कि जब हमने पेंडुलम बॉब हैंग किया था ना, वो इसलिए किया था ताकि हम इसके ऊपर अपना एक लाइन ड्रॉ कर सकें। अगर ये मेरा इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट था और मेरे पास यहाँ पे 3 इसके अंदर कह लो कि ये मेरे पास 3 इसमें होल हुए हुए थे। तो अब जब मैं इसके ऊपर एनालिसिस कर रहा हूँ ना बेटा, कि मैंने बारी बारी हर होल से इसको हैंग किया, और हैंग करने के बाद जो मेरे पास लाइन जनरेट हुई थी, एक लाइन मैंने इस होल से की थी, तो लेट्स से वो लाइन ऐसे जा रही थी। इसी तरह जब दूसरे वाले होल से हैंग किया था, तो उसके नीचे उसके जो लाइन ड्रॉ हुई प्लम लाइन के पीछे, वो ऐसे जा रही थी।
इसी तरह थर्ड वाले होल से हैंग किया, तो वह ऐसे जा रहा है। मैं हर होल से हैंग करके उसकी जो प्लम लाइन है उसके पीछे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ पेंसिल से। तो मैंने पहले होल से हैंग किया तो लाइन ड्रॉ की, अब मुझे पता है कि मेरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी लाइन पे कहीं ना कहीं। फिर जब मैं इसे दूसरे होल से हैंग करूंगा, कि मैंने इस वाले होल से हैंग किया था मिसाल के तौर पे, और इसको स्विंग करके रुकने दिया, तो लाइन ऐसी बनी। तो जहां दोनों का इंटरसेक्शन था, मुझे पता चल गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहीं पे। थर्ड वाले होल से हैंग करना सिर्फ इसलिए था कि भाई आप कंफर्म कर लो कि वाकई में ये बन जाए। सिर्फ एक श्योरिटी को करने के लिए, एक श्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए आपने वाला मामला, थर्ड होल वाला मामला किया। जहां पे ये तीनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, दैट इज द प्लेस वेयर यू हैव योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। प्लम लाइन एक्सपेरिमेंट को अगर मैं यहाँ पे छोटे से पॉइंटर्स की फॉर्म में लिख दूं, आपका इंटरसेक्शन पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो। हैव अ लुक एट दिस। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। देखिए, सेकंड डायग्राम इज एक्चुअली अ साइड व्यू ऑफ व्हाट यू सी फ्रॉम द फ्रंट।
चले में, if that is clear to you, let's move on forward. So we talked about how to find out the center of gravity of objects that are pretty much like irregular in shape, and we had no idea कि भाई कहाँ पे होगी COGs की, तो हमें पता चल गया भाई center of gravity कैसे निकाली जाए. अच्छा, now I'm going to talk about the principle of moments. Look, beta, when you talk about the idea of principle of moments, it's actually one of the conditions for an object to be in equilibrium. Principle of moments से कहता है कि if your object is in rotational equilibrium means it's not falling to the right nor it's falling to the left. सही, rotational equilibrium में है, balance हुआ है, तो clockwise moment और anti-clockwise moment एक दूसरे के equal होंगे. See, clockwise moment and anti-clockwise moment will be equal to one another. Let me give you an understanding example. Imagine we had a long rod that was pivoted at its center. See, a long rod that was pivoted at its center. And there were two different masses placed over there. One of them is a larger one, and the other one is a smaller one. Okay? These two masses exert two different forces. This is F1, okay, and this is F2. And they have their perpendicular distances. ये इसका डिस्टेंस है D1, और ये इसका डिस्टेंस है D2. ये उल्टा T जो है, I told you it's the sign of like perpendicular ना, ये दोनों चीजों में आपस में 90 डिग्री का एंगल है. प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से कहता है कि भाई फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन इक्विलिब्रियम, मतलब it's starting like this. For an object to be in equilibrium, sum of clockwise moments must be equal to sum of anti-clockwise moments. For an object to be in equilibrium, the sum of clockwise moments must be equal to the sum of anti-clockwise moments. मतलब जितनी ताकत से ये चीज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रही है, उतनी ही ताकत से ये चीज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी मूवमेंट करने की कोशिश कर रही है. एंड एज अ रिजल्ट इनमें से कोई भी चीज किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर पा रही. ना आप राइट साइड नीचे गिरता देखोगे, ना आप लेफ्ट साइड नीचे गिरता देखोगे. आपका सिस्टम बैलेंस हो जाएगा. तो हमारे लिए इक्विलिब्रियम में होने का रीजन ये नहीं होता कि भाई राइट साइड पे जितनी फोर्स है उतनी लेफ्ट पे लगाओ. रोटेशनल इक्विलिब्रियम में फोर्सेस बैलेंस होना जरूरी नहीं है. रोटेशनल इक्विलिब्रियम में मोमेंट्स बैलेंस होना जरूरी है. सही, फोर्सेस तो कम ज्यादा हो सकती हैं. A small light-weighted person can balance a heavy person sitting on a seesaw. लेकिन उसके लिए तो करना क्या पड़ेगा? The fat person should be sitting closer, and the thin guy
must be sitting at a greater distance. So to balance something in rotational equilibrium, you don't need equal forces on both sides. You need equal moments, and moments depend on force and perpendicular distance both. Mathematically ये बात इस तरह कही जाती है कि भाई sum of all the moments in clockwise equals sum of all the moments in anti-clockwise. इसको हम शॉर्टन करके कभी कभार ऐसे लिख देते हैं भाई F1 into D1 या F2 इक्वल into D2. एंटी क्लॉकवाइज इक्वल क्लॉकवाइज भी कहा जा सकता है. वैसे तो अगर क्लॉकवाइज के लिहाज से देखो तो F2 into D2 हो जाएगा ये. आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो F1 D1 equals F2 D2. So you can read that as well. कि clockwise moments must be equal to anti-clockwise. और यहाँ पे हम बात कहता चलूं to balance in rotation equal moments are required, not equal forces. सही, इक्वल मोमेंट्स की जरूरत होती है, इक्वल फोर्सेस की जरूरत नहीं होती. इसीलिए तो डिस्टेंसेस अलग अलग रखे गए कि अगर फोर्स कम है तो डिस्टेंस बढ़ा दो, फोर्स ज्यादा है तो डिस्टेंस कम कर दो. ये विल बी एबल टू बैलेंस इट आउट. जैसे अगर मैं नंबर्स की फॉर्म में एग्जांपल दूं कि भाई F1 की वैल्यू ज्यादा थी, 100 थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.2 था, लेकिन F2 की डिस्टेंस F2 की वैल्यू कम थी, 40. सही, लेकिन डिस्टेंस 0.5 था. तो F1 into D1 और F2 into D2 के लिहाज से अगर आप देखें, हालांकि फोर्सेस अलग अलग हैं लेकिन मोमेंट सेम आ रहा है आपके पास. यहाँ पे भी आपके पास 20 न्यूटन मीटर बन रहा है, यहाँ पे भी 20 न्यूटन मीटर बनेगा. इसका मतलब आपका सिस्टम बैलेंस्ड है. डिफरेंट फोर्सेस बट सिस्टम इज बैलेंस्ड, क्योंकि मोमेंट्स की जरूरत होती है, फोर्सेस की नहीं. Now, let me give you an example of how this thing really works. So we'll pick up a question or two from our past papers and we'll see how this thing goes about. Sure. Let us begin with this question over here. Again, I'll be adding these questions in your notes as well.
The question says the diagram shows a muscle and a bone in person's arm. The hand holds a load of 40 newtons and the elbow acts as a pivot. ठीक है, this is our pivot. कहते ये हैं कि what is the tension in the muscle due to the load? मसल में कितनी फोर्स आ रही होगी? अब आप देख सकते हो कि उसने आपको कुछ सिस्टम बना के दिखाया, and to simplify it, what I'm going to do is I'm going to make this entire arm like a single rod, ठीक है, which is pivoted over here in the cord. मैंने इसको पिवट बना दिया. So there is one force which is in the muscles. ये आ गई आपके पास टेंशन फोर्स. ठीक है, and a distance is of 5 centimeters. So that's 5 centimeters from the pivot. And then there is the load. So at the end, so let's say I give you a load over here at the end. The load is of 40 newtons and the distance is 35 centimeters. तो अब आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे the load 40 newtons वाला, this is trying to rotate the system in the clockwise direction. And the tension in your muscle is trying to make the system move in the anti-clockwise direction. उसको बैलेंस करने के लिए अभी हमने क्या पढ़ा? Movement of clockwise should be equal to movement of anti-clockwise. So I can say by F1 into D1 equals F2 into D2. So my force is 40 and my distance is 35. पहली वाली फोर्स को अगर मैं ले लूं, if I consider this as my F1 and this as my D1 and I consider this as my F2 and this as my D2, मैं ये कह सकता हूं F1 into D1, that is 40 into 35 equals T times 5. If I solve this, 5 जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा, 5 7 35, 7 4 28, ये हो गया 280 newtons. This means our answer is C. इसमें किसी को अगर कंफ्यूजन है तो वो पूछ ले मुझसे.
How would you know which one is anti-clockwise? Well, try to see if that is the only force acting on your object, where would this entire system go? तो अगर सिर्फ टेंशन लग रही होती तो वो क्या करता है, इस रॉड को ऐसे उठा लेता ऊपर, ये कौन सी डायरेक्शन में घूम गई रॉड? एंटी क्लॉकवाइज. अच्छा भाई, next up, go on to the next question over here. Yes, this one, it's a good one as well. Give this question a read, my dear ones. अब इस क्वेश्चन में कहता है यूनिफॉर्म बीम इज पिवटेड एट इट्स सेंटर, द बीम इज बैलेंस्ड एंड थ्री वेट्स इन द पोजीशन शोन. अच्छा, इसमें एक से ज्यादा मामला था. अगर क्वेश्चन में ये कहता है व्हाट इज द लेंथ डी, सिस्टम बैलेंस्ड है. सिस्टम बैलेंस्ड होने का मतलब यही हो गया कि भाई there are two forces that I see which are trying to make my system move in the clockwise direction. दोनों यही चाह रहे हैं कि ये रॉड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे, but it's this 300 न्यूटन फोर्स which is trying कि मेरा सिस्टम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे. Two of them is trying to make the system move in the clockwise. One of them is trying to make the system move in the anti-clockwise. Well, then what is the length d? Length d कितनी होगी? अब हमें ये बात पता है whenever a system is in equilibrium, clockwise moment and anti-clockwise moment are equal. तो clockwise moment में एक प्रोड्यूस हुआ है 350 वाली न्यूटन ने, तो मैं कह सकता हूँ भाई F1 D1 की तरह F1 into D1, फिर F2 into D2. There are two such forces जो सिस्टम को क्लॉकवाइज में घुमा रही हैं. And there is this third force जो लेफ्ट पे लग रही है और वो सिस्टम को एंटी क्लॉकवाइज में. So I'm calling this F1, I'm calling this F2, and this one as F3. So two of them are trying to make the system in the clockwise and one of them is trying to make the system go in the anti-clockwise. So I can say अच्छा भाई ठीक है, the 350 Newton time distance d plus 100 times 0.5 equals 300 times 0.4. Clockwise moments equal anti-clockwise. एक मोमेंट इसका आ गया 350 into d, एक मोमेंट इसका आ गया 100 into 0.5 और एक मोमेंट इसका आ गया 300 into 0.4. Now you can solve it up and be able to figure it out.
350 into d, ये तो ये रहेगा. It's going to be 300 0 multiplied by 0.4 minus 100 multiplied by 0.5. जो आंसर आएगा we'll divide it by 350. D turns out to be 0.2 meters. So the answer is C. By calculations, calculator पे solve करो ना बेटा. नहीं, मैं बहुत पिटाई लगा दूंगा, virtually पिटाई लगाऊंगा मैं तुम्हारी. You take this on the other side of the equation, subtract हो जाएगा ना ये, and then you divide it by 350. Solve हुआ ये? Yes, sir. ठीक है. Now I'm going to give you a question that I want you guys to solve by yourself and see if you can find the right answer. Try this one. Sir, 40. 40 newtons. ठीक है, let's see. देखिए भाई, इस क्वेश्चन में the weight of the beam is trying to make the system move in the anti-clockwise direction. ठीक है, this time the pivot's over here. ठीक है,
and the 60 Newton force is trying to make the system move in the clockwise direction. वो बोलते हैं भाई if the system is in equilibrium तो बताइए कितना होना चाहिए weight of the beam. बोला ठीक है भाई F1 D1 equals F2 D2 बना दो अब इस चीज को. This is F1, this is F2. I can simply write F1 times D1 equals F2 times D2. तो यहाँ पे F1 times 30, F2 is 60 times 50. So if someone took 20 newtons, 20 centimeters of distance, they would have gotten the wrong answer. क्योंकि distance हमेशा pivot से लिया जाता है. The pivot was over here. तो आपने distance pivot से लेना है अपनी force तक का. It's not just 30 or 20. 60 newton तक का जो distance है, it's all the way 20 and 30 combined, which is 50. यहाँ पे F1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 100. Is that clear? चलिए एक आपको एक और सवाल हो जाए. This is the one. Give it a try as well. कोशिश करो इसको. It's very tricky type of a question. This question में the good part is the 60 Newton force is trying to make the system move in the clockwise direction. F is acting upwards, so it's trying to make the system move in the anti-clockwise direction. It's trying to lift it up. See, and so is this 30 Newton force. This 30 Newton force and that F force, they're both trying to make the system move in the anti-clockwise, and it's just this 60 Newton force which is trying to make the system move in clockwise. If you were able to figure this out, this means you are good to go.
मरियम हमेशा बेटा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को जज करने का तरीका जो मैं भी यूज करता हूँ वो ये है कि इमेजिन एवरीथिंग इज वैनिश्ड, सिर्फ एक वही फोर्स बाकी रह गई है और यहाँ से आपने सिस्टम को पिवट किया। तो अगर आप इस वाली फोर्स अप्लाई करते हो तो आपका सिस्टम कहाँ घूमेगा? अगर आप इसको उठाने की कोशिश करते हो, सही है, इफ यू ट्राइंग टू लिफ्ट इट अप एंड इट्स फिक्स्ड ओवर हियर, इट्स पिवटेड ओवर हियर, इट कैन रोटेट अबाउट दिस पॉइंट, तो सोचो ना कि अगर ये आप अपनी फोर्स अप्लाई करते मतलब वो कहाँ घूमता? इट वुड मूव लाइक दिस। और इसी तरह अगर ये 30 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते, इट वुड हैव मूव्ड इन द सेम डायरेक्शन। दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में घुमा रही है, एफ बी और 30 न्यूटन। Sir, is the सिर्फ ये answer? 60 न्यूटन वाली है क्या चीज? No, you can go ahead. I'll tell you the answer later. सिर्फ ये 60 न्यूटन वाली फोर्स है जो सिस्टम को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन दे रहा है। एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्योंकि दिस इज द ओनली फोर्स जो अगर आपके सिस्टम पे लग रही होती एंड दीज फोर्सेस वुड हैव बीन देयर, तो हमारे जो ये रॉड है जिस पे प्लेस्ड है, इट वुड हैव फॉलन डाउनवर्ड्स, इस तरह घूम के गिरती। अब आप इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे एफ का डिस्टेंस अगर मैं क्लॉकवाइज इनटू एंटी क्लॉकवाइज करता हूँ, क्लॉकवाइज में 60 न्यूटन की फोर्स और 30 सेंटीमीटर्स का उसका डिस्टेंस। एंटी क्लॉकवाइज में आई हैव दिस एफ फोर्स और उसका डिस्टेंस है 50, क्योंकि डिस्टेंस पिवट से लेके फोर्स तक का लेना होता है आपने। और दूसरी 30 न्यूटन फोर्स है जिसका डिस्टेंस है 40। ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज में। अब आप इसको सॉल्व कर लो। यहां से आपको एफ मिल जाएगा। That's from Newton's. Shabash. All those who gave 12 as the right answer. Shabash, bachcho. Let me add this worksheet as well. ठीक है भाई, so we keep the lesson till here. That is it for today. Inshallah ta'ala, in our next class we are going to take it even further, and we'll be talking about the stability of your systems. So इसको stability को improve करने के तरीके कार क्या होते हैं, and then we'll be solving some theory questions as well for practice, ताकि हमारे पास हमारी कमांड जो है वो अच्छी। ठीक है मेरे जवानों, see you in next class, take care, Allah Hafiz.